Can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. As you know, the exam is going to be held from 21st February, right? Mains examination आपनको आसिगला जोटा कि OPSC upload कर सारे already. And जो मैंने भी new अच्छी and जो मैंने करो mains अच्छी. First of all, तो जो मैंने को भी mains अच्छी इतना. They don't have much time. And जो मैंने को भी prelims में preparations चलती. So if you feel any kind of doubt your preparations regarding prelims examinations or in terms of जो मैंने मेंस दोचंती तांकर किसी strategy plan में जैसे किसी problem होची बा केमती बार preparations करते so don't feel any kind of hesitations please contact us and we will be happy to help you and guide you under the Gurukul initiative as you know. So let's wait for a few more seconds then we will start our sessions. समझते এটা बहुत ही important topic टे हबो बा session टे हबो आपनकर mains and prelims oriented जो मनकर मेंस अपियर हेबे तांको पे भी कंटेंट अछि जो मनकर प्रीलिम्स अपियर हेबे नेक्स्ट अपकमिंग मंथ रे हबो आपनकर 2022 रो प्रीलिम्स टे ता पई मध्ये ये हेल्पफुल रहबो. Doubt regarding your preparations regarding current affairs जहां भी किछि आपन राइट डाउन करके लिखियन राइट so that आपनकर one time जे भी पचारिबे तो one time रे क्लियर आज जो करंट अफेयर क्लास टे हो नेक्स्ट फेब्रुअरी आपनकर मेंस ही जाउची एंड आज रो करंट अफेयर किछि एमती टॉपिक्स अछि किछि एमती चैप्टर अछि ओडिसा रिगार्डिंग जोटा कि आपनको पई जीएस पेपर पई वेरी मच हेल्पफुल हो एंड जीएस पेपर आपनकर ए क्वेश्चंस गुडा को आसीबार चांसेस बहुत ही हाई परसेंटेज थाए प्रोबेबिलिटी थाए लाइक आपनकर 60 to 70% थाए कारण जीएस पेपर जे डायनामिक क्वेश्चन आसे रिगार्डिंग रीजनल डिस्पैरिटीज रिगार्डिंग स्टेट ओके सेते टाइप रो क्वेश्चन सब आसे एंड आपण माने ताकू मिस कर दिथांती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस कारण इंटरनेट रे भी एते सारा रिसोर्सेस नहीं एंड आपण को पाखरे एते टाइम नहीं जोतरे कि आपण वर्ल्ड इंडियन देन आफ्टर दैट आपण स्टेट रो सब प्रॉब्लम सब देखिबे बा क्वेश्चन सब कंप्लीट करबे आंसर राइटिंग करबे तो आज रो सेशन को ठीक भलो भाबरे देखिबे एंड जो डायनामिक्स आपण को शेयर करबे आज रो सेशन में काइंडली ताकू से ऊपर वर्क करबे आपण यदि मु जति की परसेंटेज आपन कंप्लीट कर दोची अपार्ट फ्रॉम दैट आपन माने कोन करिवे से टॉपिक बा से डायरेक्शन ऊपर आपन वर्क करबे राइट जो मन को एबे मेंस अछि फेब्रुअरी रे फॉर जीएस पेपर में पूछेटा स्पेशली चेक हां जान को यस प्लीज से आपन को वॉइस कटी कटी आछन ब्रेक होचे आपन वॉइस टे Please say. I can see 24 participants. Any doubt? यहाँ पे किसी आपन को डाउट्स अछि ताकू नोट डाउन करके रखि थांतो ड्यूरिंग द क्लास मत आपन पचाते ठीक अछि जस्ट ठीक है ऑनलाइन जेतु ये ऑनलाइन भी डायरेक्टली अपन करो लाइव अछि हम ऑनलाइन प्रॉब्लम ठीक I think we should start. Everyone agree with my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So as you can see, like topics to be covered, Ajiro special session topics ko cover up from Odisha logistic policies 2022 जो policy था
And under this policy amar बहुत सारा policies new policies introduce ହେଇଛି आपनकर माने थिबो जोटा कि हमर कॉन्क्लेव चलतला मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव टाइम रे बहुत सारा policies असतला regarding Odisha export promotion policy 2022, Odisha food processing policy 2022, and Odisha civil aviation policy 2022, right? After that Odisha tops NFSA PDS index. Okay, then dhan 310 but 310 जोटा कि मार्क ହେଇଛି जोटा कि India's first high protein rich variety dhan, right? Then Odisha raises GST exemptions on kendu leaves. बहुत ही crucial topic ये रहिबो आपनकर for GS paper. Then come to the Sahitya Academy award. Okay, Odisha fifth from bottom in the social progress index. What is social progress index? ये भी आपनकर important रहिबो. Odisha in TUF 2022 जोटा कि FICCI तरफ होइतला, right? And then India successfully test Agni 5 ballistic missile. Okay, quickly आपनकर ए content रे हमें discuss करता. But before that मु काहे कि एमती सब arrange कर कारण आपनको जिते भी सब अपकमिंग एग्जामिनेशन हबो मींस 2020 जोटा कि आपन रिसेंटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाला ओपीएससी रो आपण माने मार्क करथिबे सेतिर क्वेश्चन डायनामिक्स आस्ट्री एंड स्टेटमेंट बेस्ड आस्ट्री, राइट? सो आपण माने जेतेले ताको सॉल्व करबे डायरेक्टली को सोर्सेस रु सेही सब आंसर मिलबनी. तो आपण मानकु करिवार कोन दरकार कौन सी भी टॉपिक आपण चूज करछन ता रिलेटेबल जहां भी टॉपिक्स अछि पॉइंट्स अछि टर्म्स अछि, ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि ता ऊपर आपण इनडायरेक्टली सोर्सेस रु पढिबे लाइक डायनामिक आपण को आंसर रहबो सब सो दैट आपण गोटे टॉपिक ऊपर बा गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर डायरेक्टली फोकस न करी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट जोतरे कि सिटा कंसंट्रेट ही रहउछि बा सिटी पॉइंटेड ही रहउछन्ती बा सिटी को इंडिकेट करछन्ती से जो पर्टिकुलर टॉपिक आपण को ता विषय जानि बर अछि, ठीक अछि? सेटा गोटे जिंस माइंड रे फिट कर दियंतु जो माने मेंस देबे से माने मध्य जते भी टाइम पीरियड अछि से माने से हिसाब रे पढा पढी करिवे आपण को प्रिपरेशंस करिवे जो माने प्रीलिम्स रे अपियर हेबे ताकर पॉइंट ऑफ व्यू एमति बाबर जो टॉपिक भी आपण पढुचंती ताकू डायनामिक वे रे पढिबे सो दैट आपण को प्रीलिम्स रे इजी तो नुहे किंतु अपेक्षा को तो आपण को क्लियर हे जिवो आपण एज्यूम करि परबे. ओके, so start kariya from Odisha logistic policy 2020 here on your screen. So Odisha logistic policy 2022. So what do you mean by logistic? What is logistic? Logistic कहले हमें basically Similar to transportation, sir. anyone Goods transport, sir. Yes, sir. only goods transport कारण हमें एटा जीएस पर्सपेक्टिव रे पढिबा हमें याकू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रे पढिबा. So गोटे स्टेट रो बा गोटे कंट्री रो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कोन है? What do you mean by logistic in terms of economic point of view? So it is all about your resource management. Transportation एथिरे जिवो, goods एथिरे जिवो, okay, storage एथिरे जिवो, acquired एथिरे जिवो, सब किछि जिवो to final destinations. So जदि हमें कहबा होल टोटल ये गोटे रिसोर्स मैनेजमेंट रो गोटे कीटा लॉजिस्टिक. सो ओडिशा लॉजिस्टिक पॉलिसी जोटा कि रिसेंटली आस्थिला तो कौन इंडिकेट है? Logistic is the backbone of an economy and it is a significant part of supply chain management. So it is all about your management system, right? Management of what? Roadways, railways, airways, waterways engaged in storing, managing, transporting and delivering products. बुझियला about logistic एति जिंस क्लियर कारण हमें ताकू जति डायरेक्टली देखिबा एते डायरेक्टली करंट अफेयर बहुत कम आछ किंतु इनडायरेक्टली वे रे आपनकर जीएस पेपर रे हेल्प करिवो कि डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू को जति स्ट्रांग करिवे अछि ताले यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स व्हाट इज लॉजिस्टिक एंड काहे की स्कीम टास्क. ओके, देन कम टू द विजन. तार विजन कोन था? द पॉलिसी envisions creating an integrated logistic ecosystem in Odisha. Integrated means to whole total logistic ecosystem taro solutions neki aschanti government and hence competitiveness, operational efficiency, sustainability through the innovations, various types of innovations of governance, transparency,
quality and disruptive technologies. Okay. Like artificial intelligence super work habo, new technology super work habo, transparency rahibo, like 5T. Okay, quality rahibo, governance, good governance rahibo. So एठी आपण केमति भाबरे पढिबे जो पॉइंट ऑफ व्यू रे मु आपन को स्टडी करिया पे कहूची लाइक आपण माने ए रिगार्डिंग पढिबे व्हाट इज कॉम्पिटिटिवनेस व्हाट इज गुड गवर्नेंस का को कहा जाय तार क्राइटेरिया कोन ओके टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूजेस इन गुड गवर्नेंस केमति रे हेल्प करे लाइक ट्रांसपेरेंसी केमति हेल्प करिवो गुड गवर्नेंस पई क्वालिटी केमति गुड गवर्नेंस पई हेल्प करिवो ओके आपनकर पॉइंट ऑफ व्यू बा आपनकर थिंकिंग प्रोसेस ता एमति रहबा दरकार okay and disruptive technology thereby strengthening the state's positions as a preferred destinations for trade and commerce so basically a scheme ta asla khali strong kariya pai apanko resource management ba economic strong karibo trade and e-commerce ba trade and commerce bujhiyala next your objectives of kon objective like this like mapping of facilities for overall development गोटे रोड मैप बा गोटे ब्लूप्रिंट वी कैन से ब्लूप्रिंट गोटे प्रिपेयर करे एफिशिएंट यूटिलाइजेशंस ऑफ एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जहां भी एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अछि तारो इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस केमति बारे हे परिबो आपण माने जानछन कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिसा रे अछि किंतु तारो प्रॉपर यूटिलाइजेशंस हे परबो ओके तारो जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अछि ताको केमति मोर टू मोर यूटिलाइज करा जे देन थर्ड डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशंस ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज across the state augmentations for it strengthening the first and last mile of connectivity so augmentation so, करना augmentations माने आपनकर जो like directions wise आपनकर डेवलपमेंट को directions रे ही परिबो okay logistic facilities को ideas को आपण portray करिबे various directions रे augment कर ताको proper judge करकी augment कर परबे means गोटे जगह रु आउटे से कम्युनिकेट करि परबे आपन को ट्रांस माने आइडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस को राइट देन पोर्ट लीड टू लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी एंड ए पॉइंट आई मीन मिस करले लाइक स्ट्रेंथनिंग द फास्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी so fast and last mile of connectivity ए कांसेप्ट आपन को मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स रे बहुत टाइम यूज करबे केमति कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन केमति तार अप्रोच रही मैक्रो इकोनॉमिक्स top to bottom ruhe macroeconomics small scale economics when I'm talking about macroeconomics macro means top to bottoms pro level apan ko growth hele to level ko automatically se ase and microeconomics bottom of approach jota ki nitiya kare okay so exactly like that strengthening the first and last mile connectivity first जेतला हमर स्कीम ता हेतला लास्ट माइल जहा को हमर फाइनल डेस्टिनेशन जोठी रहबा कथा सेठी की आपनकर कनेक्शन ता रहउची ना नहीं बा कनेक्टिविटी ता रहउची देन नेक्स्ट पोर्ट लीड लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी तो पोर्ट को कनेक्ट करा जिवो थ्रू द लॉजिस्टिक मॉडल्स improve quality of logistic facilities and services in the state increase technology penetrations more and more technology सेतरे इन्वॉल्व करा जिवो सो दैट टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट हेले ऑटोमेटिकली प्रोसेस सब डिजिटाइजेशन से जिवो एंड स्किल डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल डेवलपमेंट देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो एटा आपनकर हेल्प करबो कोठी प्रीलिम्स प्लस मेंस रो कंबाइंड प्रिपरेशंस इंटीग्रेटेड sir डायरेक्टली प्रीलिम पे excuse me sir sir hello हां sir improve trade and commerce can be sir कोटा improve trading and commerce हां through this logistic connectivity so logistic what do you mean by logistic हम जिंती कहलु कि logistic is all about your transportation of resource goods management and service and storage of goods and resource manage of what your transportations your required resources your storage capacity सब किछि include करके तारो resource management करे तो trade and commerce भी automatically develop होबो कोथरे की logistic approach रे yes sir logistic approach under रे जाउची बुझे ये आपको हेल्प करो बारंबार कहूची ये मेंस पर्सपेक्टिव रे आपको हेल्प करियो जो माने भी मेंस प्रिपेयर करछुंदी जीएस रे आपन स्ट्रांग हेबे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रो आपन स्टेट क्वेश्चन जे आसीबो को डेवलपमेंट करिया दरकार अछि यू कैन ऐड ऑल दिस पॉइंट्स
Okay, like infrastructure development or technological development जदि ओडिशा रे दरकार अछि बा स्टेट रे दरकार अछि त को क्राइटेरिया बा ऑब्जेक्टिव रहबा दरकार. You can add these points. Okay. Then framework for implementations. এই जो फ्रेम माने जो स्कीम टे इम्प्लीमेंट हो तार गोटे स्पेशल फ्रेमवर्क तो रहबा दरकार. फ्रेमवर्क कोन रहबो लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लॉजिस्टिक्स सेल गोटे क्रिएट करा कारण तांको द्वारा हबो ई प्रोसेस टा स्टेट लॉजिस्टिक्स सेल. The cell will act as think tank like Niti Aayog. बुझी पारछंती. Yes, sir. The cell will act as think tank to identify areas को area रे development दरकार अछि logistic point of view, provide overall directions to the growth of logistics sector in the state, right? Then establishment of logistic policy cell. गोटे policy cell create करा जिवो like the cell provides hand holding support. तर गोटे फंड दरकार गोटे हैंड होल्डिंग बा डायरेक्टली ताकू होल्ड करके जने काम करथुवा दरकार हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द स्टेक होल्डर्स टू गेट all requisites approval and clearance relating to the logistic operations. तापनि बहुत सारे क्लियरेंस दरकार ताकू के करथुवा दरकार मींस से जो पॉलिसी लॉजिस्टिक सेल्स रहथुवा दरकार. Then finally city logistic coordinations committee गोटे कमिटी बसा जिवो like the state proposes to develop city logistic coordination committee in 2 municipalities initially to duita municipalities ho ba municipal areas ho to improve the urban freight efficiency and ease cargo movement. जो cargo means अपन को जो जिनस पत्र ट्रेड अपन करंती like ship को आज cargo and cargo movement बा freight जो charges हो तार गोटे perfectly गोटे balance बा गोटे like efficiency केमति डेवलप करिवो urban area रे दीटा पाखापाखि इनिशियल फेज रे दीटा म्युनिसिपालिटी कुने की से कमिटी गठन करा बुझेला. एंड एई लॉजिस्टिक पॉलिसी जितले आस्तला या अंडर रे आहुरी न्यू स्कीम्स सब आस्तला जोटा की फ्यूचर स्कीम्स फ्यूचर ऑफ स्टेट वी कैन से ए स्कीम गुडा आस्तला. प्लीज मार्क दिस ओडिशा एक्सपोर्ट प्रमोशंस पॉलिसी 2022 रिसेंटली जितले आपनकर कॉन्क्लेव टे हितला सेतरे ई सब आउटकम आस्तला. तो आपनकर मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव तो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबनी आपन माने भी जानथि कारण डायरेक्टली समस्त को जणा अछि डेट वाइज को कंट्री वाइज जो माने भी जाननाथि मोर प्रीवियस वीडियो देखिने दे आपन ऑलरेडी अवेलेबल अछि YouTube रे मध्य. ओके सेते मु क्लियरली कहिछि को कंट्री एतरे पार्टिसिपेट करथले एतरो ओके को होस्ट हेतले. सो ओडिशा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी यस. तो बिफोर गोइंग टू द ओडिशा प्रमोशन पॉलिसी हमें हमर जानि रखियो दरकार हमर कैपेसिटी कोन रछि एक्सपोर्ट प्रमोशन. So Odisha government progressive policy framework is supposed to take the state to the league of top 5 exporting state to next upcoming year asibo 2026 through 2026 and 27 भितरे. Okay, से top 5 ranking को आनिबार ओडिसा रो प्लान अछि, right? And आ कोन अछि. So export promotion strategy is collaboration with the leading export promotions council and other trade related organizations. Various trade related organizations अछि ताको से टाई अप हो एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल से टाई अप हो सो दैट हमर कोन हो टॉप 5 कैटेगरी को हमें आसबा बा टॉप 5 लिस्ट को हमें आसबा. सर एबे केते रैंक अछि एक्सपोर्ट ये रे रैंकिंग रे एबे रैंकिंग नहीं एबे रैंकिंग एपर्यंत हेनी कारण यार जो ट्रेड रूट को हमें फास्ट कैटेगरी को एबे ओडिसा डाउन देखि अछि यदि हम कंपेयर करिया बाकी पोर्ट स्टेट गुडा को सहित कि ओडिसा डाउन रही अछि ताकू टॉप 5 रैंक को आनिया पई हमको हेल्प दरकार कार कोलैबोरेशंस दरकार लीडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स रो एंड ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस एबे सिंपली फुल प्रूफ आपनकर रैंकिंग किछि हेनी. ओके तो यार नेक्स्ट टारगेट रखा है कि 2026 टू 27 भितरे आपनकर टॉप 5 रैंक रे आसबा दरकार पोर्ट सिटी बा पोर्ट स्टेट्स जो माने भी अछि बा कोस्टल स्टेट अंडर रे. सो यार ऑब्जेक्टिव कोन रहबो लाइक हमें जानबा कि व्हाट इज ओडिशा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कोन कोन सब पॉलिसी रही ओडिशा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट so it provides a roadmap. It provides a roadmap framework to promote the exports of goods and services. Odisha export promotion policy employment generations and value additions in line with the Make in India program. Right. It aims to address the evolving and dynamic changes in international trade landscape and meet global challenges and surmounting the trade barriers. You can add these lines for your men's examinations as a content. My content is able to use kar pare.
Then come to the vision to take Odisha to the league of top 5 exporting state. Then objective chronology of this policy. So facilitate incremental growth of export of product identified in the focus sectors, promote product diversifications through value additions, promote initiative to enhance product quality and standards, and support certification of the product certification provide कराजिबो products export from the state जोटा भी export कराजिबो state. Promote market diversifications with the special focus on the access of new market को search करेंगे कोटी sell करते बा trade करते. Okay. Promote skill development and capacity building to improve the competitiveness to the export units. Okay. And then promote entrepreneurship in the field of export. More and more entrepreneurs actually export जो sector से more strong होगा. Facilitate whole of government approach to improve export competitiveness in the state. Facilitate regulatory reforms, बहुत सारे reforms आना चाहिए to improve the ease of exporting and facilitate the development of trade infrastructure in the state. Next, Odisha Food Processing Policy 2022. Odisha Food Processing 2022 को जीवा पूर्वरु, as you can see on your screen, that's 10 agroclimatic zones in Odisha. Now, आपण माने मते comment section में comment करंतु कि total India रो केतेटा agroclimatic zone अछि. How many agroclimatic zones are present or are situated in India right now? And जो मैंने मेंस अपियर करिवे ताकर जीएस पई ये बहुत इंपोर्टेंट जीएस पेपर पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन रु आपन को क्वेश्चन मस्ट आसे प्रति वर्ष फ्रीक्वेंटली आसे क्वेश्चंस. What is agroclimatic zones? केते टाइप ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन अछि इंडिया रे एंड ओडिसा रे केते अछि? 15 संतोष दिचंती थमेश्वर 18. बाकी समझते प्लीज कमेंट डाउन बिलो. 16. Okay, so 15 touch upon. Okay, so objective like objective and strategy: increase the flow of private sector investment. It provides the fiscal and non-fiscal incentives, infrastructure development, skill development, cluster approach for the development of the sectors. These are the objectives and strategy. यार नोडल एजेंसी भी रहितबा दरकार. नोडल एजेंसी के वर्क करबो नोडल एजेंसी हिसाब रे द एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी and the director of industries like Odisha along with the regional or district industries centers RICS or DICS shall be the implementing agency. किए ताको implement करिवो district the director of the industries like Odisha along with the regional or district industries centers. Clear? Then ease of doing business in Odisha. Ease of doing business in Odisha कौन कहूची objective यारो single window clearance authority. Multiple windows through no ki single window clearance darkar. So is laid down at the district and state level. Koti ko sajibo district and state level provide to provide clearance to the projects. Exclusive industrial cluster parks for food processing industries. Setting up a common facilities center in identified the cluster. Okay. Directorate of Export Promotion and Marketing Odisha will set up food testing laboratories with accreditations from National Accreditations Board for testing and calibrations laboratories. Okay, जोटा कि अछि कटक, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, राउरकेला. Online system for submission of applications forms for various clearance and tracking of applications. तो ये पॉइंट गुडा को मु काहे कि कोची कारण ये नेक्स्ट एग्जाम रे आपन को हेल्प करियो जोटा कि अपकमिंग फेब्रुअरी जोटा स्टार्ट होचे आपन को आई थिंक 23rd रो आपन को जीएस पेपर 22 रो आपन को जीएस पेपर स्टार्ट होची. सेतरे आपन को डेफिनेटली हेल्प करबो टू ऐड सम पॉइंट्स. देन डेवलपमेंट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन्स फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. Then come to the Odisha aviation policy. कारण आपण माने मार्क करथि जोटा प्रीवियस ईयर एग्जाम हितला आपन मेंस एग्जामिनेशन सेतरे बहुत सारा ओडिसा रो कंटेंट पा ओडिसा रो क्वेश्चंस नथला.
and we can expect like etro Odisha questions kichita economic point of view ru asipare that to dynamic way not directly dynamic point of view re asipare karan recently bahut sara plans hechi okay and current affairs gude सब cover up and currently Odisha has 19 airports and airstrips okay 12 are state owned only state capacity tar achi baki samaste interstate misi करछन्ति like 13 helicopters in the state and then the Biju Patnaik International Airport ये intrastate भी work होचे interstate and international flights while the Veer Surendra Sai Airport कोडी होचे डा Veer Surendra Sai सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा Jharsuguda Jaipur and Jaipur Airport Koraput providing the intrastate and interstate flight okay एमन सब interstate and interstate flight कारण ये civil aviation policy एबे आसी so you have to know all these points then objective kon roichi improve the connectivity to add at least 3 potential airstrip newly Utkela okay Kalahandi Amarda Mayurbhanj then Rongailunda Ganjam to functional airports category yanko so functional airport category convert kare then partnering with the private operators increase employment opportunities kemti bere Odisha development hi paro logistic and whole way re eta apanku help then come to next current affair Odisha top NFSA PDS index while I am talking about the PDS please apanku eta home tax hochi jo mane bhi dekhuchenti video you have to read about PDS केबे ये स्टार्ट हेतला कौन सब क्राइटेरिया हेतला मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री अंडर रही छी ठीक सब कुछ आपण देखिबे याको हमें एटी डिस्कस करू NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ठीक ए हिसाब रे अचीव द फर्स्ट रैंक इन द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बट TPDS operations the state is followed by Uttar Pradesh Andhra Pradesh and Gujarat परे परे की अछि ये टॉप को ओडिशा जेतु एंड तापरे अछि उत्तर प्रदेश पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन रे अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 या विषय भी आपण देखिबे एंड तापरे अछि आंध्र प्रदेश एंड गुजरात क्लियर देन कम टू धान 310 and it is India's first high protein rich variety okay. So the National Rice Research Institute, Kodiochi, National Rice Research Institute, कटक सर Kotakra, सर जगतपुर Kotakra, विद्याधरपुर National Research Rice Research Institute, Vidyadarpur, Kotakra. Sir, सेटा And Central Rice Research Institute CRRI. अच्छा ओके नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यारो हेडक्वार्टर कोडी अछि जस्ट अ मिनट माय फॉल्ट एनआरआई रो हेडक्वार्टर कोडी अछि कोडी अछि sorry sir I think because sir national rights I think national rights research yes central visit I जो अपन करो अछि CRRI sir ये सेम अछि अपन कटक विद्याधरपुर अछि से दीटा को गोटे हां दीटा जो गोटे so for fight against malnutrition in country आपण मन देखिथिले जोटा कंटेंट कार हाईएस्ट धान जोटा भी राइस अछि तरे को विटामिन कंटेंट बेसी है विटामिन ए राइट तो एटा इंडिया रो फर्स्ट एंटी राइस जोटा की प्रोटीन जो कंटेंट बेसी रहछि ता पूर्व भी बहुत सारा बाहर छी तो से रिगार्डिंग भी आपण को क्वेश्चन आसी पारे स्टेटमेंट बेस रो कि ता पूर्व किछि एंती आस्तला कि नहीं लाइक द न्यू वैरायटी ऑफ धान 310 will replace the popular navin okay
in integrated irrigated and shallow rain fed areas. The Purguru jota asla Naveen asla, and Dhan 315 variety has high Jeep content. जो 315 जोड़तला धान, and Dhan 311 is nutrient rich variety. Then high grain protein. Then Dhan 411 is high protein Swarna variety, and Dhan 311, also known as Mukul, has been released and notified for the Odisha and Assam for nutrient rich rice. तो एगुडी को जानिबा आपन को इम्पोर्टेंट एकी नाही कारण स्टेटमेंट बेस रे ई टाइप आसबो कारण धान 310 से सोलली बा एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस हेनी ता पूर्व रे बहुत सारा रिसर्च है कि बहुत सारा वेराइटीज ऑफ राइसेस बाकी ठीक. The next, Odisha raises GST exemptions on Kendu leaf. तर जो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेतला सेतरे डिमांड कराइतला ओडिसा कि केंदु लीफ ऊपर जो डबल टैक्सेशन लगा होची जीएसटी डबल निया होची ताकू छाड़ करा लाइक the state government demanded the exemption of goods and service tax on Kendu leaf at 48th council meeting. Okay. Then pitching for immediate rollback of GST of Kendu leaf, State's Finance Minister Niranjan Pujari ये भी आपको हेल्प करिवो regarding बहुत सारा माने बहुत क्वेश्चन आपन को आसे लाइक स्पीकर ऑफ ओडिशा रिगार्डिंग तांकर जो वर्क रहिची तांकर जो ऑब्जेक्टिव तांकर जो भी रहिची मींस आपन को वर्क एथिक्स रहिची ता रिगार्डिंग जीएस पेपर आसे एंड फाइनेंस मिनिस्टर रिगार्डिंग आसे स्टेट रो. ओके सो said 18% tax on the commodity is against the Forest Right Act 2006 and PESA Act 1996. Okay जो 18% भी नहीं आउचे एंड आफ्टर दैट जेतले केंदु लीफ रो फाइनल गुड्स कोटा केंदु लीफ रो फाइनल गुड्स कोटा सर फाइनल प्रोडक्ट तो BD बीडी ऊपर आपन कर 28% जीएसटी ऑलरेडी लागुची एंड अगेन ता पूर्व रु केंदु लीफ ऊपर जो 18% लागुची ताकू जो ताकू रिलैक्स करिया पे ओडिसा रो डिमांड था. सो ओडिसा वाज ओनली स्टेट to seek the commodity to be listed under the exempted item as the center levied tax. ये खाली only state अछि ओडिसा रे जोतरी के दी टाइम आपन को जीएसटी लागुची गोटे होची केंदु लीफ ऊपर एंड आफ्टर द फाइनल गुड्स ऊपर भी लागुची जो फाइनल प्रोडक्ट ऊपर लाइक 28% रो तो ताकू छाड़ करे पे यहां पर डिमांड छै. As per the special package, in the first phase, rupees 10,000 will be given to the each plucker. जो मैंने केंदु लीफ प्लकर में जो मैंने केंदु लीफ कलेक्ट करा and rupees 15,000 to each seasonal staff or staff and binders. So further all Kendu leaves plucker को से मैंने को category under को आनी पे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना provide करबे and the stipend will be given to their children कारण आपन जानते हो दरकार की जो मैंने Kendu leaf plucker असुती तांकर भी children माने सेतरे इन्वॉल्व था. ओके देखिए हमें नेक्स्ट स्लाइड रे मिलियो. Then meritorious students will be awarded at the district level. एगुलो सब गवर्नमेंट रो प्रोविजन सब रहिछि करंटली. Then status of Kendu leaves or Tendu leaves, English Tendu leaves plucking in Odisha. Then Kendu leaf plucking रो प्रॉब्लम देखिबा बा Kendu leaf जो भी हमरो कलेक्ट करा होछि तांकर बहुत सारा स्टेट रो प्रॉब्लम्स रहिछि सेगुडी को सब कलेक्ट हो सेगुडी को सब कवर हो आपनकर रीजनल डिस्पैरिटीज एंड. ओके सो Tendu leaf but Tendu tree is deciduous. What do you mean by deciduous? once in a life year sir साइड कोट होता leaves. Yes. आगे किछ ऐड करिया पे चाहिए Sir, grown in less rain area, growing less than less to medium rain area. Moderate climate area रे सर देखा जाए. so deciduous means माने तांकर जो पत्र झड़ा है. ओके once in a year what time particular time period था जो उतरे सामने leaf fall कर that is known as deciduous. so ये गोटे deciduous first under as Tendu leaf but Tendu tree and new leaves comes out in two phases. दुईटा फेज रे आसे गोटे होची बैसाखी टाइम रे गोटे होची कार्तिक मास टाइम रे से हिसाब रे ताको नाम दिया छि बैसाखी लीव्स एंड कार्तिक लीव्स.
Odisha is the second important tenduli producing state. So first which in Madhya Pradesh, with 25 lakh standard bags, nearly 25% occupies the first position in this regard. Tendul leaves are collected in 23 out of 30 revenue districts. हम जो ओडिशा रे 30 टा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अछि से थ्रू 23 टा डिस्ट्रिक्ट रे केंदुली को कलेक्ट करा जाय तो को डिस्ट्रिक्ट को कलेक्ट करा जाय से होची कटक पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा भद्रक एंड बालेश्वर एथरे केंदुली कलेक्शंस करा जाय यदि याको हमें बात दे देबा ताले बाकी सब रे आपनकर केंदुली कलेक्ट करा जाय so Kenduli for Tenduli producing regions constitute about 3/4 of the state's geographical area. And top Tenduli divisions of Odisha, those are Navranpur, Jaipur, Padampur, okay, Patnagar and Annagul. Right. Then after dividing each Tenduli divisions into 4 zones, so which is north, south, east and west, 5 villages in each zones. Okay. Plucking is done primarily by women, about 85%. So what we can say, like women man percentage itire besi achi, and jeta apanka vulnerable societies ro ba vulnerable jo apanka system achi categories achi setire problem hele setru questions bahut sara arise so etire women mane already include hochunti and children mane be include hochunti to you have to know about this. Okay, about 85% respondent women. Level of literacy amongst plucker is very low, only about 18% literate. Majority pluckers are STs, okay, 55%, 55.1%, and SC occupies the second position, 23.4%. Salient features, like every plucker should be given in plucking. Salient recommendations to government. It are government को recommendations कराउची गोटे कमिटी तरफ और ओडिसा कमिटी वसाइला government को आसिला कि ई सब recommendations दिया गला like every plucker should be given the plucking cards कारण समस्त को plucking cards legal on mandatory basis. Payment to pluckers should be made within 1 week from the date of completion of plucking. Children below 14 years age should not be allowed to pluck कारण 14 वर्ष तळरु मध्ये तांकर जो ये होची फैमिली ऑक्युपेशंस तांकर तो समने कलेक्ट करंती तांको अलाउ न करा जो कारण समने चाइल्ड लेबर कैटेगरी अंडर को आसी so government should provide facilities like water, shoes, baskets, carry bags, umbrella and such other items for use by the pluckers in forest. So एटा कमिटी रो काहे के रिकमेंडेशंस रहला ए तो सब सुविधा तांको काहे कि दिया जबा दरकार कारण ये भी तो एक्साइज जो प्रोडक्ट हिसाब रे आसु अपन नारकोटिक प्रोडक्ट टोबैको प्रोडक्ट हिसाब रे आसु तो काहे कि एते सब फैसिलिटीज देबा कथा कैन से काहे कि एते फैसिलिटीज दिया जबा कथा सर जेमिति सर कहले कि 85% एतरे वुमेन एंगेज अछंती एंड 55% एंड 50% एसटी एंड एससी होछंती सो तांकर बेसिक फैसिलिटी जोटा अवेलेबल नथिवर सेत में गवर्नमेंट प्रोवाइड करा पे चाहू छी एंड ओडिशा की सेकंड पोजीशन कैरी करची तो सेति पे सर एंड ओडिशा जेहेतु सेकंड पोजीशन कैरी करची तो निहाती बा ऑब्वियसली ता पाको को मोर रेवेन्यू आसतो राइट हम मार्केट इस प्रोडक्ट रेवेन्यू मोर आसे जो कि गवर्नमेंट लाइक इन माने गवर्नमेंट जो आपनकर वेरियस डेफिसिट अछि बा गवर्नमेंट जो बजट अछि सेतरे से लाइक डिवाइड करंतु सो डेवलपमेंट वर्क ही परिबो सो दैट्स व्हाई एटी जो माने भी रेवेन्यू को जनरेट करिया पई बा रेवेन्यू को ग्रो करिया पई जो माने भी जो सेक्टर भी हेल्प तो फर्स्ट ऑफ ऑल तांको हेल्प दिबा तांको जहां भी नीड अछि ताको हमें फुलफिल करिया. So water, shoes, basket, carry bags, umbrella, it is recommendation दिया था. Then benefit of minimum wage, ताको गोटे minimum wage मिलेगा दरकार bonus and incentive etc. 50% of profit should go. 50% should go the 3-tier panchayati raj institutions. जति के भी revenue आसीबो government कोथरे invest करिबो 50% से 3-tier panchayati raj system रे invest करिबो namely the gram panchayat पंचायत समिति एंड जिला परिषद एंड जो मानकर भी 3-tier पंचायत सिस्टम रे नेम गुडी को मने रहनी प्लीज मार्क करबे ग्राम पंचायत से देन पंचायत समिति देन जिला परिषद
came to a ratio divided upon 75, 15, and 10 respectively. Okay, then rest 50% to the Kenduli pluggers. जो 100% revenue आसिबो बा जति की amount आसिबो से 100% रो 50% development या कर लगा दिबो सब 3 tier पंचायत राज system से and rest 50% को Kenduli plucker को दिया जी एटा recommendation था. And then come to the Sahitya Academy honors. Okay. तो जमती अपन जाने चंदी कि गायत्री बड़ा पंडा Gayatri Balapanda will receive the Sahitya Academy Award 2022 for her book Dayanadi. So it is basically related to the Kalinga war Dayanadi. एथिमें तांको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलची and the साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 yes. So जो मैंने just a minute. Every autumn, yes, every autumn पे जितना पत्र झड़ा दियंती ज्योति प्रकाश Decidius. So Sahitya Academy Bhasha Samman 2022 will be accorded to faculty member of the Central Sanskrit University at Puri, Udaynath Jha. Tanku Medici Sahitya Academy Bhasha Samman. Right? Then, so for his contributions in this field for classical and medieval literatures from the eastern region in eastern region of India तांको award मिली उदयनाथ झा. Then rest जो मैंने भी रहे like साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी प्राइज for translations. तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीतचंती like दिलीप बेहरा for लंठन. Okay. साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार नरेंद्र प्रसाद दास for कोलाहल and हलाहल. कोलाहल ना हलाहल. Okay. कोलाहल ना हलाहल. Then केंद्र साहित्य अकादमी प्राइज फॉर ट्रांसलेशंस. कमला सुखपति से अवार्ड पाइछंती फॉर सुनेली बाबर काकू को बुक से ट्रांसलेट करछंती तेलुगु नोवेल रु वेंदी मेघम जे लिखछंती कि लाइक सैयद सलीम ताकर जो बुक टे अछि वेंदी मेघम ताको ट्रांसलेट करछंती तेलुगु बुक टे एंड से पाइछंती केंद्र साहित्य अकादमी प्राइज. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then साहित्य अकादमी अवार्ड विषय जानबो. साहित्य अकादमी स्टार्ट हेतला केबे 1954 रे. Okay. Academy gives 24 awards annually in literary works. Beside that, 22 language जोटा 22 टा भाषा रही. Then please mention जो माने भी जानि छंती कमेंट बॉक्स रे your article regarding your 22 language schedule language जो रही है. को schedule ले अछि. 8 schedule and article number. Comment down below. From the yes, 311 and 411 are types of dhan. मैंने सब धान कैटेगरी बा राइस कैटेगरी में 8 schedule under article को article ले जाए comment down करो तो so I can check. Okay, so 22 language enumerated in the constitutions of India, and the Sahitya Academy has recognized English and Rajasthani as the languages in which its program may be implemented, especially English and Rajasthani. The Sahitya Academy Award is the second highest literary honor by the government of India after Jnanpith Award. इधर कौन सा provide करा जाए? कोटे copper plaque, okay, provide करा जाए, shawl provide करा जाए, okay. Then 1 lakh provide करा जाए. जोटा copper plaque अपन देखी परसेंट award था. Side to picture है. Coming to the next, Odisha fifth from the bottom in social progress index. So prepared by institutes from for competitiveness and social progress imperative and the released by Economic Advisory Council of Council to Prime Minister EACPM. Yeah, they are released with social progress index.
With overall score 48.19, Odisha is at 32nd positions among 36 state and union territory. जो 36 state union territory अछि 32 माने तळ आडू पूरा position अछि Odisha bottom रे. So Puducherry top करछि in chart with the score of 65.99, Lakshadweep second, Goa and Sikkim are the second. Lakshadweep, Goa, and Sikkim. Okay. Third and fourth respectively. Lakshadweep second, Goa third, and Sikkim fourth place. Then what is EACPM? Okay. So it is an independent body constituted to give advice on economic and related issue to the Prime Minister. The Prime Minister advise. So EACPM is responsible for analyzing and advising the Prime Minister on issue of macroeconomics, importance that Prime Minister refers to. These could be neither suo motu or a reference from the Prime Minister or anyone else. This could be either suo motu, nije tarafru generate karibo, kimba on the reference of Prime Minister or anyone else to generate a system. Discuss like EACPM, and they also include attending to any other task as may be desired by the Prime Ministers for time to time. Right? Then what is SPI, and it is all what is SPI all about? Okay. So it is comprehensive tool that can serve as holistic measure of a country's social progress at national and subnational levels. The report aims to provide the systematic account of the special progress made at all levels in the country. The index uses an extensive framework comprising 89 indicators. 89 indicators at the state level and 49 at the district level. Assessment components, the index assesses states and districts based on 12 components across 3 critical dimensions of social progress. That is basic human needs. Okay. Then it assesses the performance of the state and districts in the nutrition, basic medical care, and water and sanitation, personal safety, and shelter. Right. Then foundation of well-being. It evaluates the progress made by the country across the component and of access to basic knowledge and access to information and communications, health and wellness, and environmental quality. Opportunities, it focuses on the personal rights, personal freedom, and choice. Inclusiveness and access of advanced education. So Odisha was among the state with the lowest score under the water and sanitation indicator. So या पूर्व हमें जानले कि बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग ओडिशा बॉटम पोजीशन जो होची कोकोडा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू सेटा में देखो. So Malkangiri has the lowest 26.26% of household having access to tap water supply, and Nuapada is the best performing district in the state with 92.23% household with tap water supply. So सबटू lowest position की होची Malkangiri, सबटू highest position की होची Nuapada. Odisha scored 33.04 in personal safety to be placed among the poor performing state. In crime against women, Odisha is clubbed with Assam, Delhi, Telangana, Haryana, and Rajasthan having crime rates above 90. So Odisha safe zone 9. So in access to informations and communications, the state scores lowest 23.712 remain below Bihar and Jharkhand at 18.66. Okay, Nabarangpur was among the low performers. Among 224 districts, 16 were from Odisha, where prevalence of anemia has increased at alarming level. Anemia body. So please comment down. Anemia पे हमरो state government को initiative बा को scheme बाहर हो चुकी. या कुन मध्य मु last class रे last आपको video रे को मंत्र में cover करें. Amlan, very good. Amlan plan anemia पे हारिची तो ताकू टिके detail ले देखी नहीं थी. So Odisha has the highest 90.5% of children fully vaccinated. Fully vaccinated by Odisha highest position होची 90.5%. ये सब points गुड़ा को आपको help करिबो.
to add your quality in your mains answer. Okay, mains answer jete apan writing karibe, jete apan jo mane beti present asante mains appear karibe, mains answer writing रे अपन quality improve करिया पे सब points गुला को add करबे development रे. Then come to the Odisha in turf 2022. Odisha in turf 2022. ये हितला FICCI तरफ. Okay, FICCI. The full form of FICCI. What is the full form of FICCI? And ये sports में basically provide करेगी. What is the full form of FICCI? The best test Yes, for sir. promoting. Sir, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. The यार headquarter कोड है जी. Sir, New Delhi, sir. New Delhi रे 1927. 7, sir. Yes. हाँ 1927 में ये established है. So basically Odisha बहुत सारा like hockey को promote करूची. Recently अपन करो juggernauts like Kogem, खो-खो. Then football को मध्य promote करूची अपन माने जानते हैं. बहुत सारे गेम को ये promote करूची. So basically ओडिशा को यदि हमें देखिए कि ये best performing promoting sports sector ये prize पाइची. Okay, तो theme कौन था turf 2022 रो vision 2047 Indian sports after 100 years of independence. Right? ये था theme turf. Then come to the India successfully test Agni V missile, ballistic missile. While I'm talking about the ballistic missiles, so the type of missiles are, who can say? Yes, sir. Sir, one is ballistic missile and one is cruise missile. Ballistic missile, Very good. sir. तापर हमने discuss करेगा. Just stay, just hold your points. मैं यहाँ पर हम discuss करेगा the difference between ballistic and the cruise missile. So night trials इतना Agni V missile were successfully carried out from Kotu Abdul Kalam Island. Kotu अच्छी है. Baleswar. Sorry, sir. Sir, Bhadrak. भद्रक में. Okay. But तो actually, बेसिकली sir, ये बालेश्वर एंड भद्रक रो मिड एरिया रे अछि जोटा कि आपनकर बे ऑफ बेंगल रे अछि. क्या पूर्व नाम थिला व्हीलर आइलैंड एंड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच कैन हिट टारगेट बियॉन्ड 5000 किलोmeters. Agni V. So Agni V is India's long range surface to surface ballistic missiles. Surface to surface. So this range put almost the entire country of China within the missiles range. यदि हमें टारगेट करें पूरा टोटल रशिया पर्यंत ये जीवार कैपेसिटी है चाइना को पूरा पूरी कवर करिवो. So it is fired and forget missile. What do you mean by fire and forget? Fire and forget जो missile था like which cannot stop without an interceptor missiles. ताकू without an interceptor missiles द्वारा अटके पारियो. इंटरसेप्टर मिसाइल बैकफायर करेगी. So fire and forget missiles. So developed under the integrated guides developed under the integrated guided missile development program IGMDP. IGMDP. के जानते हैं IGMDP regarding? सर एती खाली जानि छी कि सर अब्दुल कलाम को टाइम पीरियड रे से लीडरशिप करिथिले इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम रे जोटा कि सर पाटना मिसाइल Very डेवलप good. P for पृथ्वी, F for आकाश, T for त्रिशूल, N for नाग and A for आकाश. Very good. So Agni V can bring almost the entire Asia. So हमको एटा भी देखिया पे पड़िबो कि काहे कि टेस्ट हटात कंडक्ट करे. Right? So Agni V can bring almost the entire Asia, including the northernmost part of China as well as some region in Europe under its striking range. आपनको examinations रे science and tech रू भी आसे, आपनको missile regarding रू भी आसे questions. So the Agni 1 to 4 missiles have ranged from 700 kilometers to 3,500 kilometers, and recently जो added है 5,000 beyond 5,000 kilometers हो गए. And they have already been deployed. The missile test came days after the China aggressions. Recently, जो conflict चलती China से, Chinese aggressions at Arunachal Pradesh और Tawang sectors, Tawang Valley, and China's troop tried to unilaterally like change the status quo along the line of actual control in the Yangtze area. तो ये एरिया रे प्रॉब्लम चलची तो ताकू ध्यान दे कि याकू संगे संगे टेस्ट फायर करा गला सो दैट हमें बैकअप प्लान रेडी रखवा दो.
Agni V missile. So what is Integrated Guided Missile Development Program? So it is all about the renowned scientist APJ Abdul Kalam. Okay, we can say the brainchild of renowned scientist APJ Abdul Kalam. Tankore idea thila IGMDP, and it was intended to attain the self-sufficiency in the field of missile technology. Okay. And after keeping in mind the requirements of various type of missiles by the defense forces, and the program recognized the need to develop 5 missile systems. The IGMDP formally got the approval of Indian government in 1983. It brought together the country's scientific community, academic institutions, research and development (R&D) laboratories, industries, and 3 defense services in giving shapes to the strategic and indigenous missile system. Right? Then the missile developed under the IGMDP, short range surface to surface ballistic missiles Prithvi, intermediate range surface to surface ballistic missile Agni, short range low level surface to air missiles Trishul, medium range surface to air missile Akash, and third generations anti tank missile Kuchi Nag. This is a IGMDP under a hitch. So what are Agni missile? Agni missile what is Agni missiles? So Agni class of missiles are the mainstay of India's nuclear launch capability, which also includes the Prithvi short range ballistic missiles. It is including submarine launched ballistic missiles and fighter aircraft. Agni missiles are long range nuclear weapon capable surface to surface ballistic missiles. The first missile of a series, Agni 1, was developed under the Integrated Guided Missile Development Program IGMDP and tested in 1989. First missile. And after its success, Agni missile program was separated. You have to separate it from the IGMDP. Upon realizing its strategic importance, it was designated as the special program in Indian defense project, specially and provided adequate fund for subsequent development and for further R&D. And as of November 2019, the missile is in the Agni series are being inducted into services. Okay. So what are the other range of Agni missiles? So Agni 1, it is a medium range ballistic missile with a range of 700 to 800 kilometers. The next, Agni 2, it is also a medium range ballistic missile with a range more than 2000 kilometers. Agni 3, it is also intermediate range ballistic missiles with a range of more than 2500 kilometers. Agni 4, it is also an medium range ballistic missile with range is more than 3500 kilometers and can fire from road mobile launcher. Road mobile launcher भी आपको fire करा जाता है. Then Agni V, the longest of Agni series. Okay, as of now. Then तापर ये test under trial अच्छी Agni 6, the longest of the Agni series and intercontinental ballistic missiles. Okay, with the range of 11,000 to 12,000 kilometers. So it is under development. Then what do you mean by surface to surface missile? So surface to surface missiles, the SSM or ground to ground missiles, is a missile designed to be launched from the ground or the sea and strike target on land or at sea. They may be fired from handheld or vehicle mounted vehicles, from fixed installations or from ship. They are often powered by rockets, a rocket engine, or sometimes fired by the explosive charges. Okay. So India surface to surface missile ko available. Agni missile achi, Prithvi achi, Surya achi, and Saurya achi and Surya achi. Okay, Saurya and Surya. Perfect. Then difference between ballistic and cruise missile. Now, please say what is the basic difference between ballistic and cruise missile? Sir, The ballistic missile. Propelled for a short duration, sir, after the launch, and cruise missile is they self-propelled till the end of its flight, sir. And sir, Agni and this Prithvi are the ballistic missiles, and BrahMos is the cruise missile. Missile.
तो देखिए यार ट्राजेक्टरी मोशंस बा तार मोशन केमती रही थाए सो फर्स्ट फोकस रखंतु ये होची बैलिस्टिक मिसाइल जोटा अग्नि एठू लॉन्च होची सो डायरेक्टली ये जाउची एमटी पापर पड़ितो एंड क्रूज मिसाइल ऑन द अदर हैंड देखंतु यार केमती बारे ये जाउची डायरेक्शंस ओके ये कौन करबो जियो सिंक्रोनस बा वी कैन से ये अर्थ रो जो रही तारो से लेयर देखि ये जीवो ओके सेम लेयर ये देखि सर लाइक एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सर सर जो बैलिस्टिक मिसाइल अछि तार सर ट्रैजेक्टरी मोशन सब बळे पैराबोलिक सर पाथ फॉलो कर पैराबोलिक यस सर बट सर क्रूज मिसाइल सब बळे पैरेलल टू द अर्थ है कि जीवो जोटा कि सर पैरेलल टू द अर्थ यस सर ब्रह्मोस जोटा कि कहले सर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किंतु सर एक्चुअली डिफरेंस कोटे आ गुटे भी रहउची जोटा कि अग्नि मिसाइल जते बळे सर एटमॉस्फेयर लॉन्च है कि टोटल टारगेट पॉइंट को दोतबो ते सर क्रूज मिसाइल थर भी आहुरी माने मैक 4 रु 6 स्पीड को कैरी करि परिबो सर एटा तार कैपेसिटी होची बैलिस्टिक मिसाइल so देखिए तारो डिटेल रे तारो डिफरेंस कोन होची so ballistic missile it is propelled only for a brief durations after a launch short durations में self propelled till the end of its flight जोटा कि देखा जाए क्रूज मिसाइल में निजे निजे प्रोपेल होती and similar to the rocket engine कोटा ballistic missile in case of cruise missile similar to the jet engine okay then ballistic missile कौन होची next long range missile leaves the earth atmosphere and re-enter it okay and in case of cruise missile the flight path is within the earth atmosphere ये atmosphere ही low then come to the ballistic missile side low precisions as it is unguided for most of its path and its trajectory depends on the gravity air resistance and Coriolis forces okay. In case of cruise missile hit targets with a high precisions as it is constantly propelled से constantly propelled होता है so that अपन मार्क करते हैं से यदि एमटी जीवो उठिबो ओके से एमटी केतले भी तार पाथ चेंज करता है तो ये पैरेलल है so can have very long range like 300 km to 12,000 km जोटा कि अग्नि रे चलछि in case of cruise missile the range is smaller below 500 kilometers जोटा कि कम टारगेट को यदि अपन बा शॉर्ट रेंज टारगेट को यदि अपन हिट करिया पे चाहछंती then heavy payloads carrying capacity जोटा ballistic missile पाकरे heavy payload से carry करि परबो in case of cruise missile payload यार limited रहइबो it can carry multiple payloads like multi independently targetable re-entry vehicles and usually carries a single payload in case of cruise missile then developed primarily to carry nuclear warheads जो कि ballistic missile अछि and ये कोथि में develop हेछि developed primarily to carry the conventional warheads okay for example होछि पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 अग्नि 1 and अग्नि रो all series धनुष missile and यार example होछि ब्रह्मोस missile एतिକି ଥିଲା आपनकर so I think almost dynamics chapter अपन को बहुत सारा क्लियर हेछि आज regarding direct topics like केंदुलिप्स पई जेतरे भी हमर जो जीएसटी कम करे पई जीएसटी काउंसिल मीटिंग रे चलतला प्रस्ताव चलतला तो what is the status of केंदुलिप in ओडिसा से रिगार्डिंग अपन सोर्सेस भी एते सहजरे बा क्विकली अवेलेबल ही पारि त डीपली किंतु सेथु क्वेश्चन आसे जे से रेवेन्यू मोर जनरेट करे सेमती किछि आपन को जहां भी किछि डाउट थला जी रिगार्डिंग डायनामिक्स टॉपिक रिगार्डिंग कोडा को ऑर्गेनाइजेशंस केमती सब स्कीम्स उडा जाउची आई थिंक ऑल क्लियर एवरीवन यस सर गोटे सर डाउट लगे सर जो ओडिसा जो टॉप टीयूआरएफ इन दिल्ली रे जो फिकी जे सर ये पटले सर टॉप कोन माने सर फुल फॉर्म ता कोन बुझेला टॉप इज बेसिकली लाइक जो तार अछि अनडुप्लिकेटिंग अनडुप्लिकेटिंग पार्ट it is basically related to your sports okay कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टॉप रो से टॉप रो सिंटी बेसिकली यार जदी फुल फॉर्म हम भी देखुतले टॉप रो एथिरे खाली स्पोर्ट्स रिलेटेड बा ताको इवेंट वाइज यूज कराई छै टॉप रो सिंटी किछि फुल फॉर्म ही नहीं अदर कंपोनेंट रे यार फुल फॉर्म अछि किंतु ए जो अवार्ड मिलछि टॉप रो फुल फॉर्म नहीं what we can say like total unduplicated reach and सेटा होछि टॉप रो फुल फॉर्म जोटा कि एथि रिलेटेबल हो दैट्स व्हाई याकू कवर करनी तार जो इवेंट थिला किरो
तार टोटल इवेंट रो नाम थिला टफ जोटा कि एतर माने केतेतम हेतला एटा को एडिशन हेतला एटा Sorry, sir. I don't know. 11th एडिशन Okay, sir. ता पूर्वरु जते भी सब इवेंट अछि सब किछि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट रिगार्डिंग अछि तो तार टोटल इवेंट रो नाम होछि टफ maybe सेटा एतरे रिलेटेबल हेते पारे लाइक टोटल अनडुप्लिकेटिंग रीच एंड फ्रीक्वेंसी दी एक्चुअली टफ फुल फॉर्म Okay, sir. Thank you. Sir, yes so the SPI protocol question, what is that? Sir, the slide को भेजो please. कोडा SPI. SPI I think sir 5 or 6 slide रहेंगे sir. बुझी पालिनी 5 पर Sir 6 number slide के 4 slide होते थिला sir okay. तो Sir, backward को SPI चल sir. तो Sir, social progress index जोड़ा sir, SPI जोड़ा. अच्छा SPI मतलब सुना SPI SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सोशल SPI FPI सुना social progress imperative इंडेक्स or index. Sir? इंडेक्स Okay. Sir, what is objective of this index? व्हाट इज दैट इंडेक्स इंडेक्स टा की कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर EACPN यांको द्वारा इंडेक्स टी बाहर एंड इंडेक्स रो पूरा क्राइटेरिया ये अपन को पाखरे अछि स्कीम से साइड्स क्राइटेरिया कोन रही छि इंडिकेटर्स कोन सब पिक करे जाय ऑल अबाउट SPI ठीक अछि मांद्री Sir, means it is made for social progress, sir, all over yes the country social progress like basic at a human different needs level. medical Okay. care nutrition personal safety shelters sanitations etc etc Okay, sir. Thank you, sir. ये टोटल सेंट्रल पई जो अपन को इंडिकेटर्स रही छी फ्रेमवर्क 89 टा इंडिकेटर्स फॉर स्टेट लेवल एंड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल 49 टा इंडिकेटर्स रही छी अगेन ये स्लाइड को आउटरे देखिए भी अपन ये प्रेजेंटेशन टा हम प्रोवाइड करके आउटरे चेक करने दे एंड जो माने भी मेंस देबे एथरे सब पॉइंट्स को लिखि नेबे अपन को नोट्स ऐड करने दे ओके हाउ मेनी ऑफ यू जो मैंने एथरो मेंस अपियर करछन केते जण अछन अमित